जी हर चीज़ का सवाल है जी। मेरे लिए अभी ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं हॉलीवुड में काम करते हुए एंड उसके बाद But I think that perseverance is very important. I think it's very important. When I started, I was 17, 18 years old. My dream was, oh God, I hope I get a film. Female superstars like Sridevi and Madhuri Dixit who commanded a lot of power in the industry, but there were very few. मेरी फीमेल एक्टर्स जो हैं, मेरी जनरेशन की फीमेल एक्टर्स हों, चाहे वो अनुष्का हो गई, दीपिका हो गई, आलिया हो गई, विद्या हो गई. Women need males as allies, जो हमारे बारे में, चाहे मेरे फादर हो, मेरे ब्रदर हो, मेरे हस्बैंड हो, मेरे इन-लॉज हों. आई थिंक सफ़र तो लंबा रहा है. 17 साल की उम्र की थी जब मैंने शुरुआत की और अब बताऊंगी नहीं, लेकिन आप सब गिन सकते हैं. काफ़ी ऊंच नीच हुई है, सीखना बहुत पड़ा. मेरी ज़िंदगी और मेरा करियर मेरा फ़िल्म स्कूल था. मैं कभी फ़िल्म स्कूल गई नहीं हूँ. सब कुछ जो मैंने सीखा है, सबसे ज़्यादा मेरा फाउंडेशन हिंदी फिल्मों से है. जो मैं बाहर जाके भी जो काम करती हूँ वो सब यहीं से सीख के गई हूँ मैं. जो मेरा ओहदा आज बना है कि मैं ऐसा शो कर सकूँ, वो उसी बलबूते पे बना है कि मैंने सब कुछ यहीं सीखा था. और हमारी इंडस्ट्री ने मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं कहीं पे भी जाके बोल सकती हूँ कि मुझे मेरा काम आता है. एंड आई थिंक सिटाडेल को इसलिए मैंने चूज़ किया क्योंकि ये एक ऐसा शो है जो ट्रूली सच में सब बहुत ग्लोबल है. तो इस शो की कहानी ये है कि जैसे हर देश में उसका अपना इंटेलिजेंस होता है. जैसे CIA हो गया, MI6 हो गया. दुनिया थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी है और दुनिया ने डिसाइड किया कि इंटेलिजेंस जो होता है उसको शेयर करना चाहिए, क्योंकि पूरी ह्यूमैनिटी का बेनिफिट होना चाहिए. देशों को एक दूसरे से सीक्रेट्स नहीं रखना चाहिए. तो हम उसके जासूस हैं, उस एक सबसे टॉप जासूस हैं इस सिटाडेल के. तो जो सिटाडेल है वो किसी भी देश में भी हो सकता है. तो इंडिया में आपके नेबर हो सकता है कि वो सिटाडेल का जासूस हो. अफ्रीका में किसी देश में कहीं पे कोई चाय बना रहा हो, वो जासूस हो सकता है. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड जो एकदम ग्लोबल तरीके से, ये कभी भी नहीं अटेम्प्ट किया गया है. स्पेशली टेलीविज़न पे तो कभी भी नहीं अटेम्प्ट किया है. ये ओरिजिनल फ्रेंचाइज है. एंड ये बहुत एक्साइटिंग बात है कि ये मेरे शोल्डर्स पे मुझे इतना बड़ा मौका मिला. आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी. मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे पंख नहीं काटे. मुझे हमेशा बोला कि तुम अपने सपने देखो और हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं. तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी, स्पेशली लड़कियों के पेरेंट्स के लिए, कि अपनी लड़कियों के पंख ना काटे. उनको अपने पैरों पे खड़ा होने दे, क्योंकि एक लड़की जब अपने पैर पे खड़ी होती है वो अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखती है. वो फाइनेंसेस का ख्याल रख सकती है. वो अपने बच्चों को बड़ा होना सिखा सकती है सही तरीके से. तो एक लड़की को जितना कर्ब किया जाए, जितना उसके स्पिरिट को तोड़ा जाए, वो अपने आप को आगे बढ़ा ही नहीं पाएगी. तो हमें अपनी देश की लड़कियों को वो बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे आदमी हो. women need males as allies, जो हमारे बारे में, चाहे मेरे फादर हो, मेरे ब्रदर हो, मेरे हस्बैंड हो, मेरे इन-लॉज हों, उन्होंने हमेशा मुझे बढ़ावा दिया है. तो वो बहुत ज़रूरी है. हमें अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से, जो लड़के हैं इस देश के, उनको समझना कि एक इस देश आगे तभी जाएगा जब हम सब आगे जाएंगे. और हम सब आगे जाने का एक बहुत अहम हिस्सा और लड़कियां और औरतें हैं. I started at a time where women were only getting mantle roles. Girls used to be sidekicks. 6-7 गाने हो गए, 5-6 सीन हो गए, आपको खुश होना चाहिए कि आपको इतना मिला है. I started at a time where the industry was a little bit like that. लेकिन मैंने अपने ही जर्नी में, मेरे करियर के दौरान मैंने देखा है हाउ मेनी वुमेन, माई को एक्टर्स, माई फीमेल एक्टर्स ऑफ माई जनरेशन, जिन्होंने कहा है हम इससे ज़्यादा हैं, हमको और चाहिए, हमें और भूख है, वी वॉन्ट मोर, वी डिज़र्व मोर. एंड यू विल सी दैट what my generation of actors did was only because the generation before us fought for it also. They also said ki I want to, like, we had female superstars like Sridevi and Madhuri Dixit who commanded a lot of power in the industry, but there were very few.
एंड देन वो फिर गायब हो गया। और फिर मेरे जनरेशन की जो लड़कियां आई हैं उन्होंने अकेले अपने फेसेस को अपने बलबूते पे फिल्मों को बेचा है, उन्होंने वो प्रोड्यूसर्स बनी हैं, उन्होंने अपने आप कहानियाँ लिखवाई हैं, ताकि क्योंकि अगर आप मुझे काम नहीं दे रहे हो मैं अपने आप काम बना लूँगी। बट आई ऑल्सो थिंक दैट कम्स फ्रॉम कॉन्वर्सेशन। हम लोग जितना हम उसके बारे में बात करेंगे कि एक लड़की का ओहदा बढ़ाना बहुत ज़रूरी है हर लेवल पे, एंड हम सिर्फ फिल्मों की बात कर रहे हैं क्योंकि वो मेरा काम है, लेकिन हर लेवल पे, हर जॉब में, हर फैमिली में एक लड़की के बारे में जो हम सोचते हैं उनका ओहदा बनाना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक मैं बहुत प्राउड हूँ मेरे जो मेरी फ़ीमेल एक्टर्स जो हैं, मेरी जनरेशन की फ़ीमेल एक्टर्स हों, चाहे वो अनुष्का हो गई, दीपिका हो गई, आलिया हो गई, विद्या हो गई, इन सारी लड़कियों ने आगे बढ़ के कहा है कि वी डिज़र्व मोर and we need more and we want more, so you have to demand it. अब hopefully जो अगली generation की लड़कियां आएंगी वो हमारे fights को नहीं fight करेंगी, you know? The one thing which was different that I did about Citadel from all the movies that I've done and stuff before is this took 1.5 years to shoot and it's only 6 episodes. Detailing, working for 1.5 years on character and हर चीज़ में you have to focus really hard on finding the little smallest details that make the characters interesting, things that you will not expect to find that. Instead of just doing superficial, ki, acha, now I'm angry in this scene and now I'm happy in this scene. It's so much more and so complex. So what I really learned from Citadel, and I try to learn from everything that I do. I'm a student of life. मैं कभी नहीं कहूँगी मुझे सब कुछ आता है, मुझे सीखना बहुत पसंद है। एंड इस शो में मैंने जो सीखा है रूसो ब्रदर्स के साथ काम करके कि इतने लार्ज स्केल में इतने सारे लोग, 400 लोग एटलीस्ट टेक्निकल क्रू हमारा था, 3 यूनिट एक साथ में काम कर रही थी, 1.5 साल के लिए हमने काम किया, बहुत राइटर्स रूम थे अराउंड द वर्ल्ड। और ये सिर्फ इस शो के बारे में, अभी तो इंडियन शो और इटालियन शो के बारे में बोल ही नहीं रही। तो इतने बड़े मुकाम में आप इतने सारे लोगों के साथ कैसे खुशी और हारमोनी के साथ काम कर सकते हो, और फिर एक ऐसा शो लाओ जो दुनिया को डिसरप्ट करे और लोग पसंद करें अराउंड द वर्ल्ड। आप सोचो अगर जो शो हिंदी में बन रहा है, अगर इटालियन में कोई बंदा बोले कि अच्छा मुझे ये कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगा, मुझे हिंदी वाला शो देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये कैरेक्टर्स अच्छे लगे। हाउ अमेजिंग इज़ दैट एट अ टाइम जहाँ पे मैं हिंदी फिल्मों से हूँ, मुझे मालूम है क्या स्ट्रगल होता था क्योंकि हमारी फिल्में सबटाइटल्स में होती हैं। सो जब हम थिएट्रिकल की बात करते हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया, हमेशा बोला जाता था कि कोई देखेगा थोड़ी ना, कितने कम थिएटर्स हो सकते हैं। लेकिन अब आप देखिए कि सबटाइटल वाली पिक्चर बेस्ट पिक्चर विन कर सकती है ऑस्कर्स में, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो कहानियाँ जो हैं दे हैव मूव्ड बियॉन्ड जस्ट बॉर्डर्स एंड लैंग्वेज, एंड सिटाडेल इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दैट। ये हर लैंग्वेज में, हर सबटाइटल में आपके पास अवेलेबल होगा ये शो, और इसका हर इंस्टॉलमेंट, तो एनीवन फ्रॉम एनीवेयर कैन एंजॉय ऑल साइड्स ऑफ इट। मुझे तो कहानी भी नहीं पता थी जब ये शो मुझे ऑफ़र हुआ। जेनिफर साल की जो हेड ऑफ़ स्टूडियो हैं अमेज़ॉन स्टूडियोज़ की, मेरी उनसे मुलाकात हो रही थी, और उन्होंने मुझे बोला कि उनका ब्रेन चाइल्ड है, ये एक ग्लोबल इंटरनेशनल शो बनाना चाहती हैं और वो मुझे एक इंटरनेशनल स्टार समझती हैं। एंड एज अ वुमन टू वुमन वो चाहती हैं कि वो एक ऐसा कैरेक्टर बनाए जहाँ पे अ मैन एंड अ वुमन आर टो टू डो, देयर इज़ नो सेपरेशन बिटवीन देम। एंड मैं इतनी इंस्पायर हुई उस बारे में, एंड देन उन्होंने उसके ग्लोबल एस्पिरेशंस के बारे में बताया, एंड हाउ दे वांट टू डू डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज एंड कनेक्ट द कैरेक्टर्स. So just as an experiment, it was so interesting to me, and it's an original IP. This is not something that is come from somewhere else. We've created it. So I was just very excited about the global nature of it. मैंने हमेशा कहा है global dominance में मुझे interest है, तो this was one way of being able to enter so many different territories around the world. And उसके बाद मुझे मालूम था रूसो ब्रदर्स attached होंगे, ये true two-hander है जिसको कहते हैं, which is a guy and a girl side by side. So I was just very excited by the ambition of the show. उसके बाद मैं उनसे मिली और उन्होंने कहानी वगैरह मुझे बताई, and I just knew I wanted to be a part of it. 5 साल की जर्नी है इस शो की, 5 साल पहले ये बात हुई थी. It's painful, but I'm someone, I mean, nobody's never had failure in their lives. I've had many failures in my life, but I like to deal with my failures personally. I'm a public person, and there's a lot I share. My whole life is an open book for most people. My expressions are decoded, my hand fingers are decoded. मैंने क्या पहना है, कौन सा जूता है, क्या बोला, my lips are red. तो उसमें आप कितना अपने पास रख सकते हो, But I've over the years gotten very good at being private. And
failure is a private moment for me, and that is just for my family and my friends. I mean, so many roadblocks, right? Like when I first started, this is 2010, 11, I started doing music and very quickly realized that that's not my strong suit. मुझे acting में वापस जाना चाहिए. So I think the first few roadblocks were convincing people that a brown girl can be a leading actor, and my quest was that because I came from Hindi movies, you know, where I was a leading actor, and I did, you know, I had to build myself very slowly, as you have to do in every industry. You know, even when I started in Bollywood, I started with smaller roles and slowly built myself as I had credibility. So वहाँ पे भी जाके I had to do the same thing. I've told you all before कि I used to go in with my show reel. I've showed directors कि ये मैंने काम किया है. I would love to get this kind of work. I did smaller roles, and finally slowly built credibility to where, you know, Quantico happened to me, and then after that I wanted to do features. So the roadblock really was convincing people that I can do that, and that was the game. The aim was always to be able to get to a point where I can shoulder the responsibility of a film like I have in my Indian movies, to be able to do that in America as well. And yes, it took 10 years, but here I am. No, because my job is an actor, and being an actor is being able to play an array of people. And those people can be good, they can be bad. I don't judge my characters. I'm just playing different human beings. So I would love for her to be proud of the fact that my mother has such range, has such incredible variety. I've played bad girls, I've played mean girls, I've played good girls, I've played all kinds of characters. So I would love for my daughter to actually be very proud of me as a human being, of the choices that I make, how I treat people when I meet them, you know, how people speak about me when I leave a room. I think those are more important values than, you know, the fact that, oh, my mother's played a specific character that may have flaws. I would actually love for her to not grow up, you know, thinking so self-righteous about characters and human beings. People are all flawed. Everyone is flawed. No one is perfect. We are all trying to showcase our perfect version of ourselves, but that's not true. So I believe in humanity, and I believe in being human, and I would love for her to be proud of that. No, it's more scary for me as a person than limiting my choices, because my choices come to me with the credibility I've built, right? So the opportunities that come to me will come to me because people will say, oh, she's a good actor, or, you know, I gave a good audition, or she makes sense for this role. But yes, it makes me more careful about what I say. It makes me a little bit more protected about myself and my family. I'm not as free as I used to be maybe 6-7 years ago. I feel a sense of that words I say are picked apart and misconstrued most of the time. Things I don't say are become headlines because of people's perceptions. So yes, it has made me a little bit more, I think, careful and protective of myself, especially now because I have a child to think of and a family to think of, and everything that I do or say may or may not impact them. So I guess there is a certain responsibility that I have started. I'm just starting to protect myself a little bit more than I used to. I was a lot more, कुछ भी बोल लो, कुछ भी पूछ लो. Not anymore. जी. हर चीज़ का सवाल है जी. I think मेरे लिए अभी almost 10 साल हो गए हैं हॉलीवुड में काम करते हुए, and उसके बाद जाके एक ऐसा शो मेरे शोल्डर्स पे जो 5 साल से बातें चल रही हैं, 1.5 साल से हमने शूट किया है, लेकिन बहुत काम और यू नो कन्विंसिंग लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए. तो यस, ये एक आई थिंक उनका नज़रिया मेरी तरफ भी बदला है, भारतीय सिनेमा की तरफ भी बदला है, भारतीय कलाकारों की तरफ भी बदला है, एंड आई थिंक उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है स्ट्रीमिंग. आई थिंक स्ट्रीमिंग ने एंटरटेनमेंट को, दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है. हम लोग सब टाइटल वाली फिल्में कहाँ कहाँ से कंज्यूम कर रहे हैं. पैरासाइट ने बेस्ट पिक्चर भी जीता सब टाइटल्स में लोग देख के. तो एंटरटेनमेंट बहुत बदल चुका है, एंड जब तक फिल्म मेकर्स उस बदलाव में नहीं यू नो इंडल्ज करेंगे, वो पीछे रह जाएंगे. तो आई थिंक वहाँ मेरा एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है, एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है भारतीय सिनेमा में, भारतीय कलाकारों में, और यू नो ग्लोबल शोज़ और ग्लोबल मूवीज़ बनाना, क्योंकि स्ट्रीमिंग की वजह से दुनिया भर के लोग हर तरह के एंटरटेनमेंट और हर भाषा के एंटरटेनमेंट को देखते हैं आजकल.
फिल्में देखती हूँ, मैं इंडियन कंटेंट को भी देखती हूँ, मैं राजकुमार राव की हर फिल्म देखती हूँ। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो मैं और मेरी फैमिली हमेशा देखते हैं, बट आई थिंक इंडियन सिनेमा ने बहुत बहुत पड़ाव क्रॉस किए हैं। हम बहुत ही इंटरनेशनल हो चुके हैं। हमारी इंडस्ट्री, हमारी फ़िल्मों के बारे में ऑफ कोर्स वेस्ट बहुत जानता है, अवेयर है फिल्म मेकर्स के बारे में। जब मैंने वेस्ट में काम करना शुरू किया, हम बहुत कम इंडियन या साउथ एशियन 4-5 लोग थे हमारे। अब मैं देखती हूँ जब पार्टीज़ में जाती हूँ, मैंने रिसेंटली शुरू किया है एक प्री ऑस्कर्स पार्टी होस्ट करना, सिर्फ साउथ एशियन नॉमिनीज़ और साउथ एशियंस के लिए, टैलेंट के लिए। एंड आई कैन नॉट टेल यू कितना मुझे आंखों में आंसू आ गए थे जब मैं उस पार्टी में थी, और मैं इतने सारे एक्टर्स और फिल्म मेकर्स से मिली जो हॉलीवुड में सालों से काम कर रहे हैं और छोटे छोटे रोल कर रहे हैं या काम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और अब हम लोग एक दूसरे को देख रहे थे और अबाउट 100, 200, 300 लोग एक साथ कलेक्टिवली आके हमने बोला कि हम यहाँ हैं और हमारी जगह है। तो हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, लेकिन मेरे लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी मुशक्क़त देखी वहाँ जाके, तो मैं बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ जगह बनाने के लिए। आई थिंक मेरे लिए क्योंकि मैं आज इस मुकाम पर पहुँची हूँ, मैं बहुत इम्पोर्टेंस रखती हूँ मेंटोरशिप में। यंग टैलेंट हो, यंग राइटर्स हो, स्पेशली फीमेल राइटर्स बिहाइंड द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डायरेक्टर्स। मैं अपने मेरा प्रोडक्शन हाउस, आई हैव अ फर्स्ट लुक डील विद अमेज़ॉन, और उनके साथ मैं काफ़ी फिल्में और टीवी शोज़ वगैरह कर रही हूँ। और वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं साउथ एशियन स्टोरीज़ बताऊँ एक ग्लोबल तरीके से, ताकि जो हमारी कहानियाँ हैं वो नॉर्मलाइज हों। वो सिर्फ ये नहीं हो कि अच्छा आज हिंदी देखना है या एक इंडियन की कहानी देखनी है। नहीं, आप नॉर्मली देखो ना, अच्छी कहानी है। तो दैट इज़ माई क्वेस्ट। अभी उसमें वक्त लगेगा, लेकिन मैंने शुरुआत तो कर दी है, ऑफ कोर्स। बट आई थिंक दैट perseverance is very important. I think it's very important. When I started, I was 17, 18 years old. My dream was, oh God, I hope I get a film. I hope I get a film with a hero, or I hope I get one movie. I hope I get one dance song. I hope I get to wear the right outfit. Your dreams and ambitions are just small. And then slowly, slowly, they become bigger and bigger and bigger. And I have very big ambitions. I have ambitions of changing how Indian talent is perceived around the world. I have big ambitions of, showcasing and presenting more global stories from South Asia and the diaspora of our nation. I want to be able to, in Hollywood and in international entertainment, see more actors who are doing leading roles that are Indian, more filmmakers making global stories and working on international shows, working on English language shows. I would love to see producers and big studios make Hindi language entertainment that travels across borders. So I've always had bigger ambitions than where I am. I'll say one line in Hindi, but मेरे पैर हमेशा चादर से बाहर होते हैं. तो in a way, I think if you aim high, then even if you fall short, you'll still be high. So I have big ambitions, and I'm hopeful that I'll be able to achieve at least a few of them. I mean, every day you wake up and think about how I can create another opportunity, and I'm trying to do the best I can in that. I really believe that, जब किसी भी एक औरत को, especially, I believe in sisterhood very much. I'm a very girl's girl. मुझे successes बहुत अच्छी लगती हैं जब लड़कियाँ persevere करके they become successful. It gives me so much inspiration because I'm a small town girl, and I have seen many of my friends and family and girls that I've known whose wings were cut off at a very young age, who didn't have the opportunity or the choices that my family gave me. So it's always been a quest of mine to be able to, I have this saying where I say when a woman takes a step forward, you should always take a step, pass your hand and bring another woman forward. And that's always been my quest. Like I said, I'm working with a lot of female writers, producers, filmmakers that I push. I'm working with really partners in Hollywood and in America to push Indian cinema, Indian talent, Indian music and movies, Indian subjects, so that they are normal and we can watch a lot of them. So I hope to be able to, every single day that I can, contribute to those that have not as much as me, because I always think कि मैं कितनी lucky हूँ या हम लोग कितने lucky हैं that we had families that
gave us this opportunity. There are so many girls. They might be as talented as us, as beautiful as us. Their desires may be as deep as us, but they are born under different circumstances and they don't get that. So I take this responsibility of the position that my family and my parents gave me very seriously, to be able to say to people that a woman's success and a woman moving forward helps families move forward. A woman is what keeps a whole family together. So when agar aap apni beti ko success doge, if you give your daughter the opportunity to stand on her own feet, she will make sure not just her family but the community thrives. So it's very important for us to teach our daughters and our sons that it's really important to push women forward and give them opportunities. Well, this was very difficult because we shot it over a year and a half. And a movie takes 60 to 90 days. You know, you finish it off in like about 90 days. But this was a TV show. It was 6 episodes. And we shot the whole thing like one large movie. And also physically to stay fit, to stay agile, to stay... you know, when you dance, ya aap workout karte ho, you have to warm up. So when you're doing stunts, we shoot it over a 12-hour day, right? You ask for technicals, so I'm giving you technicals. And when you're physical, how do you stay warm? How do you stay agile? How do you not hurt yourself? How do you remember your choreography without... I'm not really, like a spy or a fighter, or I've never been trained. I've learned for the job. But I do enjoy it, but because I have done this in the past and I have done it in Bollywood movies and like Quantico and other things, I trust myself very much. So this is kind of my wheelhouse. It's like what I'm comfortable doing. I'm good at it. So when I walk onto set, I'm not afraid of it. I can train. I'm confident. After this, I'm looking for something that scares me. I don't think anything scares me. I like challenges. First, it has to scare you, and then you have to rise above it. So I enjoy looking for work that intimidates me a little bit. Well, I disagree with you a little bit. I think that I may be, like you said, not me, before somebody misquotes me, you said that I am the only one that has been able to achieve that, right? But to me, think about the kind of Hindi movies I've done. Look at the variety of roles that I've played. Look at the kind of filmmakers that I've worked with. The best in the business, the best filmmakers in Bollywood, the best actors, the best talent. I haven't had the opportunity to do that in Hollywood yet. I want to be able to build my credibility enough as an actor to be able to work with really amazing talent, to work with really amazing filmmakers. And I hope the next decade of my life, I'll be able to do that there as well, as much as I had been able to do here. I think the fact that I had the exposure with working with the best in the business in India gave me the confidence to be able to do what I do there. So I'm hoping that's what I want to do now, is to work with really amazing filmmakers and do a variety of roles where I surprise people that are just getting to know me. You guys have known me for 20 years, but there are a lot of people and audiences around the world that are just getting to know me. And I want to show them that I can do so much more, like you have seen already. You know, हम लोग as a culture exaggerated हैं, तो हमारी फिल्में exaggerated होंगी. हम लोग कितने loudly बात करते हैं, हम लोग खाना कितना loud होता है, हम लोग music कितनी loud सुनते हैं, तो हमारी फिल्में भी loud हैं. हमारा culture जब बदलेगा तब हम ये करेंगे. क्यों बदले हमारे culture से? I think I'm very proud of the movies we make. हम जिस तरह हमारी technical जो हमारी technique है हमारी फिल्मों की, वो कितनी बाहर out of the world चली गई. Hollywood से comparison करते हैं लोग, हमारे VFX को Hollywood से comparison करते हैं. लेकिन हमारा culture जो है, उसको मत बदलो यार. वो बहुत अच्छा है. तो उससे थोड़ा अच्छी, तभी तो मज़ा आता है फिल्मों को देखने में. लाउड लाउड सुनते हैं हम लोग, डांस करते हैं थिएटर में. कभी देखा है हॉलीवुड में थिएटर में डांस कर रहे हैं? Then you shouldn't change that. I don't think so. Well, I always wanted to be play Bond, so here you go. No, I mean there are so many spy verses. I mean there's Ethan Hunt and Tom Mission Impossible. There's the Bourne series. There's Bond. There's like, you know, so many, because I think we as human beings just love the idea of spies and espionage and, you know, like intelligence and lies and deceit, and that's just a really interesting, juicy world for people who like to watch, you know, TV, and that's why those series have done really well. But I think if people want to draw comparisons, sure, you can. But I think Citadel is a very different show because this is truly global. All the movies that I'm talking about go to different countries. But here the concept of the show is that the world has decided to share its intelligence. So Citadel has no allegiance to any country. So wherever you're, suppose, where do you stay? Mumbai. Mumbai mein kahan?
Malad. Malad में तो तुम्हारे घर में तुम्हारे पास में your neighbor could be a Citadel agent and you wouldn't know about it, you know. Somebody could be a Citadel agent in Sydney, Australia, and so Citadel exists in every part of the world. So we can tell stories in every part of the world. Hence, there's an Indian franchise. Hence, there is an Italian franchise, and the possibility of many more, because that's the concept. So that's first of all very, very new. It's never been attempted before. Second thing, what is very new about this show is it's not just about one spy like the others that I talked about are. It's not one Bond, it's not one Ethan Hunt, it's not one spy. It is a world of spies, it's a world of espionage. So Citadel is very character forward, whether it's Richard's character, my character, Stanley's character, Ashley's character. The stories are, we live in the world of espionage, but it's the relationships between the characters that'll keep you glued into the show, you know, which also I think is very different from the other franchises I talked about. It was difficult, but I find difficulties interesting. I think, you know, I've been doing this for such a long time that if it's simple, then I'll be bored. And I don't like to be bored. I like to be inspired when I go to work. When I wake up in the morning and I have my coffee, I want to be excited. I want to think about what I'm doing. And so the challenge is what excites me. And this show is very challenging, physically, emotionally, in every way. But also the scale of it, like you said, it's a really big show. But to be able to helm such a big show and to see that, you know, a studio like Amazon and Agbo, which is the Russo brothers, have that kind of faith in me to be able to, you know, be the face of a show like this feels really good. I think struggle to हर इंसान की ज़िंदगी में होता है, कोई ज़िंदगी ऐसी थोड़ी ना होती है which is seamless. Like everybody has ups and downs, and I think you are a sum of your failures. You're a sum of your decisions. I think what you do after failure defines a person. Everyone fails. Now, what are you going to do? आप गिर गए हो, आपको काम नहीं मिल रहा है, अब आप क्या करोगे? आपका अगला स्टेप क्या होगा? या आपकी पिक्चरें नहीं चल रही हैं, आपका अगला स्टेप क्या होगा? If you decide to just sit back and say I've failed, then no one can help you. But you have to find the bandwidth, the strength in yourself, in your inner being, to say, I will take one step forward. So I think struggles are what make people stronger. Without struggles, life would be so easy and we'd be so entitled. I'm so excited. I can't wait for the India installment. I don't know very much about it. I just know a little bit of the story and stuff. But Varun was telling me a little bit. The other day I met him at the NMACC event and he was telling me they're in the middle of filming, and I am such an admirer of DK and Raj. I think their work is really amazing. So they're going to bring some very cool expertise onto the India show. I have seen stuff. I have seen boards and stories, and it's going to be like nothing you've seen before, and especially because it connects to this show, and this show connects to the Italian show, and then going forward, who knows how much more. It's such an exciting thing for me because I think this is not a one-off. This is going to continue and keep going and bring audiences into the world of Citadel from all over the world, and that's just so ambitious and exciting. Thank you. Good? So much. Thank you, guys. Thank you so much.